Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the concept of democratization. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन मतलब जनतंत्रीकरण। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। वेल, democratization refers to the transition from authoritarianism to liberal democracy. Therefore, the most important features of this process are the granting of basic freedom and particularly political rights, the establishment of popular and competitive elections, and the introduction of market reforms. So when we talk about democratization, then it is always referred to the process of transition from authoritarianism system of governance to liberal democracy. So when you move from authoritarianism to liberal democracy, the process, the phase of this transition is called democratization. And therefore, in this process of moving from authoritarianism system to liberal democracy, there are certain important features which are associated with the process of democratization. And these features are basically when you grant the basic freedom and particularly the political rights to the people. Every citizen must have all their basic freedom as well as political rights. Apart from this, the other very important feature of democratization process in any society is when you establish a popular and competitive elections. And these competitive and popular election must take place free and fair without any kinds of a pressure. And therefore, you allow to mobilize people through political parties. You allow political campaigning, you allow people a freedom to cast their vote without any discrimination, and as well as you create a space for everybody to contest election in the system. Beside these political rights and establishment of a popular and competitive election, it also talks about introduction of a market reforms. Market reforms are again a very important part of a democratization. Market cannot be controlled by an elites, market cannot be controlled by government, market cannot be controlled by any system. Rather, you must allow the private sectors, the individual to take their share in the market. You must allow free and fair flow of goods and services in the market, and obviously it also include introductions of various rules and regulations from a very liberal perspective, so that the real competition takes place in the economic sector. And market reform therefore is also another most important feature of understanding the democratization as a concept. जब हम डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं मतलब जनतंत्रीकरण की बात करते हैं, तो ये एक फेज़ है, एक ट्रांजिशन फेज़ है फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म टू लिबरल डेमोक्रेसी। जब भी कोई स्टेट अगर पहले अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर रहा हो और अगर वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड मोर प्रिसाइज टू अ लिबरल डेमोक्रेसी, तो वो एक ट्रांजिशन फेज़ रहता है। और उस ट्रांजिशन फेज़ में बहुत सारे जो पावर्स है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, वो लोगों को देने पड़ते हैं। अगर एक डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो ये चीज़ें लोगों को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अचीव दैट फाइनल गोल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। और ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर जो प्रोसेस है वो इंक्लूड होता है कि एक बेसिक फ्रीडम लोगों को दिया जाए, पर्टिकुलरली जो उनके पॉलिटिकल राइट्स रहते हैं ये उनको देना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि लोग उस प्रोसेस में हिस्सेदार बने, उस प्रोसेस में अपना योगदान दे, ताकि वो योगदान के कारण
एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉपुलर एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, इलेक्शन कंडक्ट करना, लोगों को राइट टू वोट, मतदान का अधिकार देना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। क्योंकि अगर लोगों के पास वो पॉलिटिकल राइट्स नहीं है जिसकी वजह से एक डेमोक्रेसी को माना जाता है, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। और इसीलिए लोगों को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, लोगों को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, पॉलिटिकल पार्टी को तैयार करना और कैंपेनिंग करना, पॉपुलर मूवमेंट को एक साथ लेके चलना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। और तभी आगे जाके ये जो लोग हैं सोसाइटी के, वो इस पूरे प्रोसेस में एक योगदान दे सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स भी बन सकते हैं। और इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉपुलर एंड कॉम्पिटिटिव फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। और अंत में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट को रिफॉर्म करना टाइम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट को आप दबा कर नहीं रख सकते, मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर कोई एलीट ग्रुप ऑफ पीपल मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट को रिफॉर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें नए नए कानून को लाना, नए नए चीज़ों को बदलाव में देखना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप को समझने के लिए या फिर किसी भी डेमोक्रेटाइजेशन को समझने के लिए। और इसीलिए ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस called democratization. So this is in short how we understand the concept of democratization. So moving forward, democratization encompasses these overlapping process. So when we talk about democratization, they are surrounded by various overlapping processes, and there are three most important processes which will help us to understand how the democratization is actually being carried out. Point number one, old regimes breaks down. Well, this usually involves the loss of legitimacy, and this could be generally linked to economic failure and the faltering loyalty of the police and military. So what does it mean here that when the democratization process starts, it only starts when the old regime breaks down, when old regime collapse. So when old regime collapse, here it basically involves that old regime, whatever it was, it might be a authoritarianism, it might be a dictatorial shape, or it might be any sort of a government, it is failing. And when it is failing, it loses its legitimacy, it loses its importance. And when it loses its importance, it is directly linked to that economic failure, because it will have the impact on economic failure, and slowly the old regime also loses the momentum or strength of its loyalty which they have enjoyed through the police and military. That means even police and military will walk away from that losing, that falling old regime. And when it happens, then you have the process of democratization, because the old regime have collapsed and now we are moving towards probably a liberal democracy. And during this process of liberal democracy, all those important basic features which I have just discussed about plays a very important role. So this is a one scenario of how the democratization process begins. पहला जो सिनारियो यहाँ पर ये है कि एक जो पुरानी जो सत्ता रहती है, ओल्ड रिजिम है, ये टूट जाती है, ये बिखर जाती है। और जब ये टूटती है, बिखर जाती है, तो वो अपना इम्पोर्टेंस खो देती है। उसका जो लेजिटिमेट पावर रहता है वो छूट जाता है, वो गिर जाता है, और इसकी वजह से इट डायरेक्टली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक फेलियर। एक बार पॉलिटिकल पावर गिर गया तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है, आपकी इकोनॉमी भी बिखर जाती है। और जब इकोनॉमी बिखर जाती है तो जो लॉयल लोग रहते हैं आपके आसपास, जैसे आपकी पुलिस रहेगी, आपकी मिलिट्री रहेगी, वो भी अपने पैर
पीछे खींचते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये रेजिम गिरने वाली है, अगर इनके साथ रहेंगे तो वो भी गिर जाएंगे, उनका भी इंस्टीट्यूशन ब्रेक हो जाएगा। और उनको पता है कि दूसरा जो पावर है और दूसरी जो फॉर्म ऑफ अथॉरिटी है वो अभी ऊपर आ रही है। और अमूमन हमने देखा है कि जहाँ कहीं पर भी कभी एक अथॉरिटेरियनिज्म सिस्टम जब गिरता है तो हमेशा वो अथॉरिटेरियनिज्म सिस्टम को रिप्लेस किया गया है एक डेमोक्रेसी ने या फिर एक लिबरल डेमोक्रेसी में। सो ये जो सिनारियो है जिसको हम कहते हैं ओल्ड रेजिम ब्रेक्स डाउन, यहाँ पर यही होता है कि ओल्ड रेजिम अपना पावर खोती है और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर रहता है, और उसके बाद उसके जो लॉयल लोग रहते हैं आसपास वो भी पीछे हटते हैं। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी begin a process of democratization and society moves towards liberal democracy। और जब ये democratization process होता है तो वो सारे political powers, वो सारे basic freedom लोगों को देना बहुत important है in order to maintain peace or in order to have a peace during the process of democratization। तो ये पहला सिनारियो है। In second very important point, it is called democratic transition. So here it witnesses the construction of a new liberal and democratic structure and processes. So second very important scenario is a democratic transition, and in this democratic transition what we witness is a construction of a new liberals. And how do we construct these new liberals? Only by allowing people to be part of the system, only by allowing people to be part of this new beginning of a new liberal, by giving them political powers, giving them economic freedom, giving them social and economic justice. And therefore during this scenario of a political transition we have various democratic structures which are taking place, various numerous institutions are being built or sometime are being rebuilt all over again, and there is a process of democratization which I have just spoken about in my earlier discussion. So this is about the second scenario called democratic transition. दूसरा जो सिनारियो ये है कि इस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में हम एक नई शुरुआत को देखते हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया जाता है, एक न्यू लिबरल आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उस न्यू लिबरल आइडिया के आसपास जो इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे आप मान लो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस न्यू लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप को सपोर्ट करते हैं, और उसका एक प्रोसेस भी रहता है। यू कैनॉट जस्ट हैव द न्यू बिल्डिंग्स और न्यू आइडियाज़, और लोगों को अगर हम पावर नहीं देंगे, लोगों को अगर हम उस मेन स्ट्रीम आइडिया से नहीं जोड़ेंगे, तो ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन कभी भी हो नहीं सकता है। सो देयरफॉर जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो सिनारियो है, इस सिनारियो में वी विटनेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू लिबरल आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, एंड देयरफॉर इन दिस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड अ प्रोसेस all those powers, all those very important powers are very important, particularly all the political powers and rights which are given to the public. So ये जो होता है ये दूसरा सिनारियो है to understand the concept of democratization. And the last very important process, the third one, is democratic consolidation. Well, here under democratic consolidation it can be seen this new structure and the processes becoming so embedded in the minds of the elite and the masses that their removal becomes unthinkable. So in the last process, when we talk about democratization, here it talks about democratic consolidation. It basically talks about that it is a time when the new structure and the processes are being consolidated. They have found a strong foundation, and when you have these strong structures and processes around,
which makes a democratization and a liberal democracy more powerful, then these structures are embedded right there in the minds of elites and masses, and therefore once it becomes a strong structure, it becomes difficult to remove them, and removing them in fact becomes unthinkable. So that means at the end of the democratizations, once you have this structure and the processes are very strong with the strong foundation, then it becomes difficult to remove them. You cannot remove them. They will always gonna be there in the minds of the elites and masses, and therefore democratic consolidation is another very important aspect of democratization and liberal democracy. तीसरा जो प्रोसेस यहाँ पर आता है, एक सिनारियो जहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो प्रोसेस है, एक बार ये स्ट्रक्चर और प्रोसेस पावरफुल हो गए, इनकी फाउंडेशन, इनकी जड़ें एकदम मजबूत हो गई, तो इन्हें लोगों के माइंड से, स्पेशली फ्रॉम द माइंड्स ऑफ एलिट्स एंड मासेस, उनको निकालना एकदम अनथिंकेबल है, एक इम्पॉसिबल चीज़ है। ये हमेशा अपनी जड़ें ज़्यादा मजबूत बनाती जाएंगे, और इसीलिए किसी भी डेमोक्रेसी को अगर मजबूत बनाना है तो वो सारा जो दारोमदार रहता है, वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, वो उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर रहती है, उन प्रोसेसेस के ऊपर रहती है। आपके स्ट्रक्चर कैसे है, आपके प्रोसेस कैसे है, अगर ये स्ट्रक्चर और प्रोसेस मजबूत रहेंगे तभी आपके डेमोक्रेसी को एक कंसोलिडेशन का टाइम मिलेगा, एक मजबूत बनने का टाइम मिलेगा। और यही जो प्रोसेस है डेमोक्रेटाइजेशन का, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहा है। सो दीज आर दी 3 मोस्ट important processes which actually make democratization more powerful and more inclusive, and I hope you have understood the concept of democratization. Thank you very much for watching this tutorial, and I will see you soon in the next tutorial. Till then, take care.